Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauri Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Welcome back for another episode of Bhagavad Gita. We're already doing the 10th chapter. That means we have crossed the halfway mark. The 10th chapter is titled The Opulence of the Absolute. विभूति योगा, भगवान की विभूतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। Why must we know the opulences of the Lord? भगवान की विभूतियों के बारे में क्यों जानना चाहिए? Because it's not enough to know that God is great. अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब है Lord is great, Allah is great, God is great. But Sanatana Dharma also explains why he is great. तो क्यों भगवान ग्रेट हैं? बस भगवान ग्रेट है बोलना काफी नहीं है, क्यों वो ग्रेट है, क्या है वो जो विषय जिसके लिए हम भगवान को ग्रेट बोलते हैं. So that is fully explained in Bhagavad Gita, and Krishna, especially in the 10th chapter, virtually reveals himself to us. उनके बारे में सारी जानकारी हमें भगवान देते हैं, और इस अध्याय में हमें ये सिखलाते हैं कि कैसे भौतिक जगत में कृष्णा को हम हर जगह महसूस कर सकते हैं. How living in the material world we can sense the presence of Krishna everywhere, all around us. We were talking in the last class how Prabhupada would always connect things to spirituality, to Krishna consciousness. How our great acharyas like Madhavendra Puri, how our great acharyas like Mukunda Datta, they all connected everything that they could relate with Krishna. So they were always Krishna conscious. They would always relate everything. सब कुछ कृष्ण के संबंध में वो देखते थे. So another example we can give is चैतन्य महाप्रभु. जब उन्होंने संन्यास लिया और first 24 years he lived the life of a non-sannyasi. Last 24 years he led the life of a sannyasi. And during these times, there were some instances where Mahaprabhu would look at a sand dune. एक थोड़ा सा तिल को देखते थे, उसको गोवर्धन समझ के भाव विभोर हो जाते थे. He would become ecstatically, devotionally involved. In trance he would go, thinking that that small sand dune, he would look at it and think it is Govardhana. And he would look at, anything he would see Krishna. Same thing is with Radharani, because Chaitanya Mahaprabhu came in the mood of Radharani. So Radharani का भी हमेशा भाव यही था, हर चीज में वो कृष्णा को देखती थी. Everywhere she could see Krishna. For example, there was a gopi called Shamala. तो उसका नाम क्या है? श्यामला. तो केवल इस गोपी को देखते ही Radharani मूर्छित हो जाती थी. Just looking at this gopi called Shamala, Radharani would faint. Why would she faint? What is her name? Her name is Shamala. तो उस गोपी को देखते ही उसका नाम याद आ जाता. She would remember her name. तो श्यामला में पहला शाम, तो श्यामला बोलते बोलते जो शाम बोलती थी, उसी वक्त उसको कृष्णा की याद आता था और वो मूर्छित हो जाती थी. And her favorite color is blue, because she wants to relate everything with Krishna, which is Ujjvala Nilamani, Krishna. So her favorite color dress is blue. In fact, in Radha Ganodesha Deepika, it is mentioned how Radharani looks.
So in that, it is mentioned that she's always wearing a blue garment. As much as possible, as many times she wears blue garment because blue color reminds her of Krishna. वो बोलते हैं उनके आंखों का कलर भी ब्लू है. Actually, the color of her eyes is not blue, but it always appears blue. Why? Because she's always thinking of Krishna. And because she's always thinking of Krishna, Krishna is always in front of her. Krishna तो राधा रानी के दास है. जहां पे राधा रानी है कृष्ण रहता है उनके सामने वो रहता है because he likes to be in front of her. He's always happy seeing राधा रानी. तो उनके सामने कौन है? कृष्णा. कृष्णा का वर्ण क्या है? नील वर्ण. तो उनके आंखों में भी आप रिफ्लेक्शन नील वर्ण का रिफ्लेक्शन होता है तो उनका आंखें ब्लू दिखता था. So everything would remind her of Krishna. So Krishna is not teaching us a technique. Acharyas are going to teach us how we can relate everything to Krishna. In a very systematic way, we are learning this. So before we go ahead, I would like to start with one question. Very nice question was asked yesterday. One of the Krishna Life devotees who attends these sessions asked this question. I really appreciate the question. So the person asked, why are prescribed duties essential for spiritual advancement? सब कुछ छोड़ छाड़ के इस दुनिया इस लाइफ के बाद कृष्णा के पास जाना है भक्ति करके, तो यहाँ रहते रहते हमें क्यों घर परिवार में रहना है, क्यों हमारे भौतिक ड्यूटीज हमें परफॉर्म करना है. वेरी नाइस क्वेश्चन. इसका आंसर भी आचार्यों ने दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, चैतन्य महाप्रभु said, स्थाने स्थिते श्रुतिगतान तनुवान मनोभी. So Chaitanya Mahaprabhu is not asking us to make any drastic changes, at least in the initial stages. So Chaitanya Mahaprabhu is telling, wherever you are situated, you are brahmachari, try to remain brahmachari. You are a grihastha, remain a grihastha. Remain with your family. As long as it is, what is the formula? As long as it is conducive for Krishna consciousness, you can remain with your family. As a head of the house, if you are a man of the house, or if you are a woman of the house and you're a mother, it is your duty to take your family in the Krishna conscious line. But to that extent, we need to be with them and guide them. But it is applicable when it is conducive for Krishna consciousness. So, sthani sthite shruti gatham. तो बस सुनिए कृष्णा के बारे में, हरे कृष्ण मंत्र जपा कीजिए. What is the mainstay devotional service in Kali Yuga? Chanting हरे कृष्ण मंत्र. वो सब लोग कर सकते हैं. 10 मिनट तो स्टार्टर को 10 मिनट तो वो कर ही सकते हैं. तो 10 मिनट अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास 10 मिनट टाइम नहीं है भगवान के लिए for chanting Hare Krishna mantra, he is fooling himself. She is leading a false life. And Bhakti Siddhanta Saraswati has told, we're talking of one round. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is the spiritual master of Srila Prabhupada, उन्होंने बहुत ही कठिन शब्द उपयोग किया है. If somebody is not chanting 1 lakh names of the Lord, अगर कोई 64 माला कर नहीं रहा हरे कृष्ण महामंत्र का 64 माला, तो वो मनुष्य है ही नहीं. तो देखिए वो जानवर है. कितने माला? 64 माला. बट वी आर टोल्ड बाय गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद कितने माला? 16 माला. तो प्रभुपाद के अगर हम इसमें आएंगे, अगर कोई 16 माला जपा नहीं कर रहा है रोज, वो आदमी नहीं है. He is not a human being. He is an animal. These are strong words used by Shastra. The Shastra will not give us sugar-coated words. Not अरे बेटा कोई बात नहीं है, एक माला कर सकते हो तो करो, वरना वो भी मत करो. No. 16 rounds for all Prabhupada disciples is a must. But to reach there, you cannot jump. Jump मारेंगे, जल्दबाजी करेंगे. Even for this, why we have to remain in family life and perform prescribed duties? Because it is a sadhana process. साधना में हम slowly develop होंगे. हमारा भक्ति बढ़ेगा. अनंत काल, millions of lifetimes of papa karma that is accumulated in us, contamination that is there in us, it has to go. Overnight it cannot go. It can go if the Lord
shows his full mercy. But the Lord will not interfere with processes. He will not interfere with either material processes or spiritual processes. Of course, the Lord can always bestow his causeless mercy. हेतु रहित कृपा वो दिखा सकते, but Lord will not interfere with the transformative process of a person, because he knows jump मारेगा तो जितना ऊपर jump मारेगा उतना नीचे धड़ार करके गिर जाएगा. So when he goes slowly, then he will stay, he will go further ahead. Of course, there are examples of people जिन्होंने छलांग मार दिया है भगवान की कृपा से और सीधा मतलब they became sannyasis, they became saints. That examples are also there. Case to case it varies. So why we should perform this prescribed duty? एक तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, प्रभुपाद ने बोला है कि only by the order of spiritual master and your authorities you can change your ashrama. When they permit, you can change your ashrama. If they do not permit, you cannot change your ashrama. So as long as that happens, till that happens, we must remain in our present ashrama. For most of us, it is grihastha ashrama. और जितने मात्रा में हमें इन्वॉल्व होना है उतने मात्रा में इन्वॉल्व होना है. एक माँ को बेटे के प्रति प्यार दिखाना है, ऐसा नहीं कि आप भगवत गीता में जान गई, सब ये डिटैच हो जाना चाहिए. पति से प्यार नहीं करना है, पुत्र से प्यार नहीं करना है, या पति बोलेगा देखो यही है भगवत गीता बोल रहा है कि सब कुछ छोड़ के, घर परिवार छोड़ के आपको आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाना है. That is nowhere Krishna is telling that. No, and of course he is telling sarva dharman parityajya. Sarva dharman parityajya means what? Forget about all your obligatory duties. Do it as a devotional service. He is not telling be irresponsible. भगवान कभी किसी को irresponsible होने का advice नहीं देते. Don't be irresponsible, but do everything as an offering for me. Sarva dharman parityajya. Don't do your duty as a father. Do your duty as a soul who has been given one son who is also a soul, and it is your duty to make him Krishna conscious. Do it for Krishna. You are a wife, be with your husband, be with your son, give them all the love. If you are a husband, give your wife and child all the love, as long as they are conducive for your Krishna conscious growth, and continue your devotional service till you come to a point where you can take that jump or leap, and that has to happen in a prescribed manner. It has to happen by authorities giving the sanction and the spiritual master giving you the permission. So by performing prescribed duties, kya hoga? So it will ensure that we don't slip down in our spiritual life. So they fulfill material desires in a regulated manner. So suddenly we cannot give up our material desires. तो भौतिक इच्छाएं तो सबके अंदर है, तो लेकिन उसको पूर्ण करने का एक regulated way Krishna is giving in Bhagavad Gita. Acharya has given us the formulas. We have to go accordingly. फिर क्या होगा? Gradually we become detached from the bodily concept of life. तो रह के संसार में इस भौतिक मनोस्थिति से हम बाहर जा सकते हैं. It's called as a drift. छलांग मारना shift होता है, dangerous होता है. Unless we are spiritually powerful, we cannot sustain it. So drift is a better process. It allows him to rise to the platform of knowledge. तो धीरे धीरे ज्ञान पाते पाते उसका जो भक्ति है वो मजबूत होता जाएगा. It will become stronger and stronger, and it's a prerequisite for liberation. इससे moksha, the ultimate moksha, that's of moksha, the topmost moksha, that is to go to Goloka and continue to do service of the Lord as an individual being. That is the highest moksha. So Krishna also mentions this in chapter 2, and first time he talks about a spiritual goal in chapter 2, liberation. So Krishna is also telling, yes, we must have a spiritual goal, and to achieve that goal, we must go systematically. We must go stepwise under the guidance of Guru, Shastra, Sadhu, and of course, Krishna. So your Srila Prabhupada Ashraya
is an attempt to make you go through that system slowly, slowly, slowly. Varna, actually, we should be in Varnashrama Dharma. But Kali Yuga mein Varnashrama Dharma, nobody can follow. So it is impractical. Although we should try to follow the Varnashrama Dharma under the guidance of a spiritual master. But in a Prabhupada Ashraya system like this, at least for the first 2-3 years, we go through systematic gain of knowledge. And Bhagavad Gita says by performing prescribed duties, we can get jnana, which is the prerequisite for liberation. So moksha के लिए एक qualification चाहिए, और वो qualification आप by cultivating your devotional life, it is going to happen. So after this long introduction for today, we will go ahead straight away with discussion of the very first sloka for today. Anantaschasmi naganam varuno yadasamaham pitranam aryama chasmi yama samyamatamaham. So here Krishna is telling into sloka number 29, of the celestial naga snakes, I am Ananta. तो एक वर्ण का जो सांप होता है उसको नागा बोलते हैं, और नागा में मेरा representation क्या है? The topmost of the nagas, Ananta. Yesterday, the last sloka we studied, what is the topmost? We are talking about another Sarpanam Vasuki. So that is also a type of snake. तो उस सर्प के कैटेगरी के स्नेक्स में I am Vasuki, और नाग के कैटेगरी के स्नेक्स में I am Ananta. So of the aquatic deities I am Varuna. Varuno Yadasam Aham. तो जो जलचर जीव है उसमें मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वरुण देव को. Then of departed ancestors I am Aryama. तो पितृलोक में मैं प्रतिनिधि हूँ पितरों का. क्या मेरा नाम है वहां Aryama. Aryama is a topmost the person in the Pitruloka, and that is Krishna. Yama Samyamatamaham, or the Dharma, the Lord of Dharma. Yama, the Lord of punishment. ये भी भगवान श्री कृष्ण है. The one who controls, the one who gives justice, dharma. He is also Krishna. Yama Samyamatam Aham. What does the purport say? Among the many celestial naga serpents, तो नाग जो कैटेगरी के स्नेक्स है उसमें मैं अनंत हूँ. एंड अनंता इज द ग्रेटेस्ट बिकॉज अनंता उनके he has millions of hoods, और उस एक एक हुड पे एक एक ब्रह्मांड बसा है. इट इज सपोर्टिंग वन ब्रह्मांड. सो लाइक दैट देयर आर करोड़ों से करोड़ों का करोड़ों ब्रह्मांड है, और इतने सारे हुड्स है अनंत का, और एक एक हुड पे एक एक ब्रह्मांड रेस्ट कर रहा है. एंड वरुणा अमंग द aquatics, so among the water bodies I am represented by Varuna, and they both represent Krishna. There is also a planet of trees, तो पितृलोका, जहां पर बहुत सारा पेड़ है. तो you can say it is the world of trees. In that, among the ancestors, the topmost ancestor, the Pratinidhi is Aryama. This Aryama is Krishna. There are many living entities who give punishment to miscreants. जैसे कि at different levels, घर में maybe father or mother punishes the child, or maybe the elder of the house, grandfather, can punish the younger people of the house. So in the societies, the panchayat head can give punishment to the person who has done wrong in the village. So like that, up to Supreme Court in India, the judge can give punishment. Then the president can overturn that punishment also. He can give his justice. Up to United Nations, and there is a court of United Nations also. That is for earth. So like that, for this Brahmanda, for our Brahmanda, there is a Yamaloka. In that Yamaloka, there is a person called Yama, Dharma Raja, who is doing justice. Book of accounts is keeping. आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो.
So Prabhupada says, a very interesting topic. I will talk about this, which is related to this now. How do I know I'm progressing in Krishna consciousness? So the Prabhupada says, the more you're becoming attached to Krishna, and the less and less you're becoming attached to material things in life, the material concept you're giving up, and spiritual vision you are going to catch, the more you catch it, that means the more Krishna conscious you're being. How do I know whether I'm progressing in Krishna consciousness? The yardstick is how much in your time, free or occupied, not just free time, free or occupied time, you are able to think of Krishna. You are able to think about your spiritual progress. That is the measure of your Krishna consciousness. मेरा पेट भर रहा है, खाना खा रहा हूं, मेरा पेट भर रहा है, मुझे कैसे पता है? वो आप ही को पता होगा, बिकॉज आप खाते खाते आपको पता चल जाएगा मेरा पेट भर गया है, अब मुझे और नहीं खाना है. बट ऑफ कोर्स देयर इज नो एंड इन स्पिरिचुअल लाइफ, बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ इज एवर एक्सपैंडिंग. हर दिन प्रोग्रेस होने का चांस मिलता है. सो प्रॉपर आल्सो सेज अनदर यार्डस्टिक इज कितने हद तक तुम भक्त हो. तो इसका मापदंड क्या है? व्हाट इज द yardstick to measure what kind of a devotee you are, what kind of a human being you are. जब कोई नहीं देख रहा है आप क्या करोगे? जब सब लोग देख रहे हैं, सब लोग मतलब अच्छे ही बनते हैं, एवरीबडी सीइंग देम. जब पति नहीं देख रहा है, पत्नी क्या करती है? दैट इज द मेजर ऑफ अवर कैरेक्टर. जब पत्नी नहीं देखती है, पति क्या करता है? That is the measure of a character. जब पति है सामने, वो तो अच्छे बन के ही रहेगी. जब पत्नी है सामने, पति अच्छे बन के ही रहेगा. Even for the child, माँ बाप के एब्सेंस में आप क्या करते हो? That is a measure of what a nice son you are or daughter you are. माँ बाप के जाते ही आप उनके एब्सेंस में क्या करते हो? That is your actual character. So there are three types of people in each one of us. First one is that whom we think we are. जो हम समझते हैं वो हम हैं. दूसरा, जो लोग समझते हैं हम हैं, बिकॉज उनके लिए तो हम स्वीटनेस दिखाते हैं, तो बाहर से हम दिखाते हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं. सो फर्स्ट पर्सनालिटी इज हु आई थिंक आई एम. सेकेंड पर्सनालिटी इज whom others think I am. There is a third personality, what you really are. तो एक तो जो आप समझते हो आप क्या हो, दूसरा जो लोग समझते हैं आप क्या हो, तो तीसरा जो रियली हो. दैट इज अवर रियल सेल्फ. व्हाट इज अवर रियल सेल्फ? जब कोई नहीं देख रहा है आप क्या करते हो? दैट इज अ मेजर ऑफ कैरेक्टर. सो दिस इज टोल्ड बाय द आचार्यस. दैट इज अ मेजर ऑफ अवर डिवोशन. जब सबके सामने अच्छा बनना बहुत ही आसान बात है, सब लोग बनने की कोशिश ही करेंगे. जब कोई नहीं है तब क्या करते हैं? ये हमारा मेजर. व्हेन नोबडी सीइंग, व्हाट डज द डिवोटी डू? दैट इज अ मेजर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ डिवोटी ही इज. इट्स अ सिंपल फैक्ट. लुक्स लाइक वेरी हार्श वर्ड्स, बट देखा जाए तो ये सत्य है. दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ. सो वी विल गो फर्दर एंड डिस्कस श्लोका नंबर 30. इससे मायूस नहीं होना कि हम ऐसे हैं. We should not become completely disgusted with ourselves, because we must know that we are currently in a stage where we are sadhakas. We are doing sadhana bhakti. Overnight कोई drastic changes हमें नहीं आएगा. We must be kind on ourselves. At the same time, we must be firm with ourselves. So we must follow these principles. We must always try to accept anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. Saying is very easy, doing is difficult, including for me. ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो it is also difficult for me. But it is all a matter of practice. What is sadhana? Sadhana means practicing devotional service. So we must try to remember this. So Hare Krishna,
I request you all to keep your audio in mute. Your not heard. Your voice should not be heard. You should keep your mic on so that you can hear me, but you should not keep your speaking mic on. You should keep it off. So we will straight away go with the next sloka. Sloka number 30. Prahaladashchasmi daityanam kala kalayatamaham mruganam cha mrugendroham vainateyascha pakshinam. So further knowledge Krishna is giving. So प्रहलाद के बारे में हमने बहुत सुना है. प्रहलाद के बारे में सोचते हुए हम नरसिम्हा को याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं among the Daityas, I am प्रहलाद. ये प्रहलाद जो है ये मैं हूँ. among the sub time काल कलयतामहम, तो जो सबको संयम में रखते हैं उसका प्रतिनिधि काल है, टाइम है, वो मैं हूँ. देन among the beasts and men, जू में जाएंगे, डिस्कवरी चैनल देखेंगे, आप लायन को देखोगे, मृगेंद्र, मृगाणाच मृगेंद्रोहम. Among the animals I am the king of forest, so it is represented by me. Vainateyascha pakshinam, among the birds the king of birds is Garuda Deva, so I am the feather carrier of Vishnu, Garuda Deva. So Garuda is a divine. Garuda represents Krishna. So Diti and Aditi are, Prabhupada starts with the purport. Diti and are two sisters. The sons of Aditi are called Adityas. Aditi ka putra hai Aditya. And sons of Diti are called Daityas. तो दिति के पुत्रों का नाम है, मतलब कैटेगरीज हैं दैत्या, दिति, दैत्या, अदिति, आदित्यास. All the Adityas are devotees of the Lord. सारे आदित्य भगवान के भक्त हैं. And all the Daityas are atheistic, नास्तिक हैं दैत्यास. So although Prahlad was born in the family of Daityas, लेकिन जो प्रहलाद है वो दैत्य कुल में पैदा हुआ, फिर भी वो भक्त है. क्यों भक्त बने? See, even a Daitya can become a devotee of the Lord. Another thing that we must learn here. So Bhagavad Gita, not only in this chapter, is so much to learn, not just about Krishna, but also about devotional life. Like for example, we are talking about Daityas. That means the category is such that anybody born in that kula is naturally atheistic. So it is already destined that because of some karma, he has to be born in Daitya Kula. And Daitya Kula में उसको इसीलिए जन्म लेना है क्योंकि उसको ये राक्षस प्रभाव का प्रदर्शन करना है, क्योंकि वही कर्म लेके वो आया है. लेकिन प्रहलादा भी उसी दैत्य कुल में आए, वो भक्त कैसे बन गए? It is because of the association of devotees. Prahalada, when his mother was pregnant with him, जब खयादू उनको कैरी कर रहे थे, तो वो कहाँ पे थे? नारद मुनि के आश्रम में थे. नारद मुनि के आश्रम में थे. नारद मुनि का ये लीला था, भगवान श्री कृष्ण का ये लीला था कि इस प्रहलाद को, बिकॉज वो उनका ऐसा कर्म था, दैत्य कुल में आना है और भक्ति के पथ में उनको आगे जाना है और एक लीला में भाग लेना है. तो विष्णु वांटेड हिम टू बी वन ऑफ द people who will play a major role in this Leela of Hiranyakashipu and Narsimha. So he was born there, but he had to be made a devotee. So that devotee was made by, because he was constantly in the association of Narada, even when he was in the womb of Kayadu. कैसे? नारद मुनि हर रोज भागवतम कथा सुनाते थे कयादू को, और कयादू सुनते सुनते सो जाती थी. और लेकिन अंदर जो भ्रूण में प्रहलाद जी थे, वो नारद जी को बोलते थे और बताइए गुरुजी, और बताइए. तो नारद भी आश्चर्यचकित हो गए. उनको पता चला यहाँ पे विष्णु का अंश है, तो मुझे सेवा करना है. तो
he used to continue to say Bhagavad Katha. That's how, even before Prahlada was born, he became a pure devotee of the Lord. And then you know what Leela he played. So he was a great devotee from his childhood. Because of his devotional service and godly nature, he is considered to be a representative of Krishna. तो कृष्णा के भक्त कृष्ण जैसे ही बन जाते हैं. It is said that we can acquire up to 78% of qualities of Krishna, maximum, जो हमने नहीं है. We can become nice devotees and acquire 78% qualities of Krishna, which is enough to go back to Krishna. So Prabhupada in one of his Leela says, one of the devotees asks one of his disciples, Prabhupada, क्या हमें pure devotee बनना ही पड़ेगा? क्या हमें शुद्ध भक्ति बनना है कृष्णा के बारे में, कृष्णा के लोक में जाने के लिए? ये तो हमारे बहुत मुश्किल होगा. So then Prabhupada said, even if you are 90% pure, even if you are a 90% devotee, you will go back to Krishna. तो डिवोटी सोचने का अरे 90% तो बहुत दूर की बात है. प्रहलाद तो डिस्टिंक्शन, आई मीन प्रभुपाद जी तो डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं, इतना मार्क्स तो नहीं मिलेगा हमें. मायूस हो गए. तो प्रहलाद जी व्यासन से उठने वाले थे. Even if you're 80% Krishna conscious, you will go back to Krishna. 80% भी कृष्णा कॉन्शियस हो तो भी आप कृष्णा के पास जाओगे. थोड़ा कुछ लोगों को मतलब कुछ लाइफ आया, लेकिन फिर भी होप नहीं था. 80% कैसे आएगा? हम तो फेल होने वाले कैंडिडेट्स हैं. तो प्रभुपाद जी तो 80% की बात कर रहे हैं. Then Prabhupada just got over in his Vyasasana and then he put his shawl on him, and while walking back he said, even if you become 70% Krishna conscious, I will take you back to Godhead. अगर आप 70% भी कृष्णा कॉन्शियस बनोगे तो मैं आपको भगवान धाम लेके ही जाऊंगा. दिस इज द गारंटी गिवन बाय प्रभुपाद जी. अब 70% मार्क्स के लिए तो हमें वी हैव टू ट्राई, वी मस्ट ट्राई 100% टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर. लेकिन उसमें 70% भी मार्क्स आ जाएगा. प्रभुपाद जी ने बोला है कि वो हमें वापस लेके जाएंगे. तो 78% की जरूरत नहीं है, विच इज हाईएस्ट परसेंटेज वी कैन गेट एज ह्यूमन बीइंग. उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता. तो 70% तक हमें प्रभुपाद जी लेके जाएंगे. एंड प्रभुपाद जी हैज टोल्ड, I am going to be the acharya for the next 10,000 years of this संस्था called ISKCON. मैं इस संस्था का अगले 10,000 साल तक मैं आचार्य बन के रहूंगा, और जब तक मेरे आखिरी शिष्य गोलोक वापस ना जाए मेरे साथ, मैं यही रहूंगा. So it is our duty towards प्रभुपाद. हमें शुद्ध भक्त बनना है, क्योंकि वरना प्रभुपाद जी यहीं पे रहेंगे 10,000 साल तक तो रहेंगे. उसके बाद उनको रहने का मौका हमें नहीं देना है. हमें भी उनके मतलब अच्छे भक्त बनना है, अच्छे डिसाइपल बनना है, और उनको विच इज आवर गुरु दक्षिणा फॉर हिम दैट ही मस्ट नॉट स्टे हियर फॉर लॉन्गर टाइम अनलेस कृष्णा वांट्स हिम टू कंटिन्यू टू डू हिज डिवोशनल सर्विस एंड और जीवों को उद्धार करे. लेकिन कलयुग के अंत में तो कोई सुनने की हालत में नहीं होगा. नो प्रवचन, नो प्रीचिंग, नो भक्ति विल हैपन, ओनली पोचिंग विल हैपन. कौन आएगा? कल के अवतार आएंगे. कल के अवतार का प्रीचिंग कैसे होगा? स्वॉर्ड से. बिकॉज कोई सुननेगा नहीं तो गला काटते जाएंगे, मारते जाएंगे कल की भगवान. बिकॉज देयर विल बी नो पॉइंट और देयर इज नो वे अ पर्सन कैन बिकम डिवोटी. 10,000 साल के बाद सब कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ना स्टार्ट होगा. गौर कलयुग कब तब स्टार्ट होगा. अभी गौर कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ, इसी के लिए हम दम तोड़ रहे हैं. गौर कलयुग है भाई, क्या क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है. गोल्डन पीरियड चल रहा है, मतलब सुनहरा स्वर्ण युग चल रहा है भक्ति का. अब इस 10,000 साल में अगर हम भक्ति करके वापस भगवत धाम नहीं जा पाएंगे तो कभी नहीं जा पाएंगे. करते रहेंगे. 4,27,000 years of Kali Yuga is remaining. So imagine how it is going to be. डरने की बात है. So quickly we must take exit. Prabhupada is telling, why are you taking a risk of another life also? पता नहीं क्या बनोगे आप. मनुष्य योनि ही मिलेगा पता नहीं, और मनुष्य योनि मिलेगा भी तो भक्त बनोगे, ये कौन सा गारंटी है? बनोगे
सारे कर्म जीरो होने के बाद आप बनोगे भक्त फिर से, लेकिन इस लाइफ टाइम का जो दुष्कर्म है उसका क्या होगा? Of course, when we surrender to Krishna and Prabhupada, at the time of initiation, all our sins will be eradicated. Zero account बन जाएगा. So that's why we must take initiation. क्यों दीक्षा लेना चाहिए? Zero account हम नहीं बना सकते. प्रभुपाद की दीक्षा लेते ही भगवान हमारे सारे पाप कर्म को जीरो कर देंगे. उसके बाद we should be careful. Then we must walk the path. Of course, because Prabhupada gives the example of turning fan. फैन तो ऑफ हो गया है, स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा टर्न कर रहा है, तो लग रहा है अरे अरे और भी पाप कर रहे हैं, रुक जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद है. पाप काम का जो कनेक्शन है बंद हो गया दीक्षा के बाद, कृष्णा के शरण में आने के बाद. बट वी मस्ट पुट आवर एफर्ट टू ट्राई एंड बिकम एज प्योर डिवोटीज एज पॉसिबल. So there are many subduing principles, but time wears down all things in the material universe and so represents Krishna. So time is a representation of Krishna. Anything that controls or is having a controlling power, that is representation of Krishna. That's why in the house, the householder father is called as head of the house. So he is representative of Krishna. Very responsible job. Mother is also representative of Krishna. Very responsible job because she controls the children. Then Raja is a representative of Krishna because he controls the country. Very, very responsible job. अगर राजा किसी के साथ अन्याय किया ना तो बहुत बड़े पाप कर्म उसको लगेगा. He has to be very, very careful. He cannot be flimsy in his activities. He must be a able representative of Krishna. Of the many animals, the lion is the most powerful and ferocious, represents Krishna. Now, million varieties of birds, Garuda, the bearer of Lord Vishnu, is the greatest. There are only 2 minutes time left. I was able to cover only 3 shlokas. It's okay. I thought I'll cover at least 6-7 shlokas today because of all small purports. Doesn't matter. Going by the flow, what I feel is relevant for the topic of the day, I'm speaking. So we'll just fit in one more shloka, shloka number 31. So in shloka number 31, so anytime we may get logged off, don't worry about that. We'll just finish the shloka. Pavana pavatamasmi Rama shastravrtamaham Jashana makaraschasmi shrotasam ahi janavi. The purport is not big here. It's the translation itself. Of purifiers of the wind. Pavana pavatamasmi. The wind purifies, and that is me. Of the wielders of weapon, I'm Rama. Krishna is telling here, मैं ही राम भगवान रामचंद्र मैं ही हूँ. Rama shastra भृतामहम. And of the fishes, I'm shark. Jashanam makaras chasmi. The जलचर में मैं shark. I am the shark. And of flowing rivers, I'm Ganga. Srotasam aham asmi janavi. तो गंगा भी मैं ही हूँ. Ganga is a representation of Krishna. Yamuna is the wife of Krishna. So she is more dear to Krishna. But Krishna represented by Ganga. So here we have come to know again, Krishna himself is telling in Bhagavad Gita, I am Ramachandra. So Rama और Krishna में कोई अंतर नहीं है. So thank you very much for joining me today. So we'll be meeting next week because from tomorrow we'll be doing our Srila Prabhupada Ashraya course. Starting with the Upasaka level. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai. Shri Gaur Nitya.